Good morning, students. In the previous video, we have done few questions of exercise 6.2, which is based on increasing and decreasing function. Now today we will do some more questions of this exercise. This is the ninth question. Here it is y equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta. Prove that it is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. That is the first quadrant. Here we differentiate it with respect to theta using the quotient rule for this first term. So you get denominator square, denominator multiplied by differentiation of numerator, that is 4 cos theta, minus 4 sin theta into differentiation of denominator, that is यहाँ तो 0 हो गया, ये minus sin theta हो गया. So you get minus 4 sin theta into minus sin theta, और theta का differentiation 1. Now simplify it, you will get 8 cos theta plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta divided by 2 plus cos theta whole square minus 1. Now after taking 4 common from these two terms, you are left with cos square theta plus sin square theta within the bracket, that is 1. So these two terms form 4. Then for increasing decreasing function we put dy by d theta equal to 0. Now now 8 cos theta plus 4 divided by 2 plus cos theta whole square equal to 1. Then cross multiply it, you will get and open this with the identity a plus b whole square. You get 4 plus cos square theta plus 4 cos theta on the right hand side. Now transfer all the terms on one side and simplify. You will get cos square theta minus 4 cos theta equal to 0. ये 4 तो cancel हो गया. Now from these two terms take cos theta common, then within bracket you are left with cos theta minus 4 equal 0. Now either cos theta is 0 or cos theta minus 4 equal to 0, which gives you cos theta equal to 4. But this is not possible because cos theta lies between minus 1 and 1. So we have only cos theta equal to 0. और cos theta कब 0 होता है? जब theta pi by 2 होता है. So theta equal to pi by 2. Now we have dy by d theta is this expression, that is 4 cos theta minus cos square theta divided by 2 plus cos theta whole square. Then you get in this interval 0 to pi by 2 interval, we have this cos theta greater than 0 because first quadrant में cos theta positive होता है, और cos theta always less than 4 because it lies between minus 1 and 1, so it is always less than 4. So 4 minus cos theta will be greater than 0. From here transfer this on this side, you get 4 minus cos theta is greater than 0. जब cos थीटा भी पॉजिटिव है, 4 माइनस cos थीटा भी पॉजिटिव है, इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था? 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. ये तो पॉजिटिव है ही क्योंकि स्क्वायर है. सो द होल टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रीवियस एक्सप्रेशन it becomes positive. It means dy by d theta should be d theta. It is positive. So we can say that y is strictly increasing in the interval 0 to pi by 2.
Now the given function, it is continuous at 0 as well as at pi by 2, so we can say that y is increasing in the closed interval 0 to pi by 2. Now the next question is, prove that the function f given by this is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. The given function is f(x) equal x square minus x plus 1. So f dash x is 2x minus 1. When you put f dash x equal to 0, you will get x equal to 1 by 2. It means this 1 by 2 divides the interval -1 to 1 into two intervals, -1 to half and half to 1. Now in this interval, let us check whether f dash x is positive or negative. So take some point between these two values. 0 lies between these two, so we can take 0. So f dash x में x को 0 रखिए, you will get f dash x equal to -1, that is less than 0. So in this interval f dash x is less than 0. So we can say that f is strictly decreasing in this open interval -1 to half. Now in the second part, half to 1, हाफ 0.5 हो गया और 1 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए. सपोज आपने 0.7 लिया, यहाँ पे आप f डैश x में 0.7 रखिए. 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1.4 एंड देन 1.4 minus 1 becomes 0.4. It means it is positive. So in the second interval, half to 1, f dash x is greater than 0, so f is strictly increasing in the open interval. अब -1 to 1 के बीच में आधे पार्ट में -1 to हाफ में तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, और हाफ से 1 के बीच में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया. तो इसका मतलब -1 to 1 में पूरे में अगर हम इंटरवल में देखें तो इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th one. Find the least value of a such that the function f given by f(x) equal to this is a strictly increasing function on 1 2. ये कह रहा है कि a की वो छोटी से छोटी क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ भी आपने निकालना है तो डेरिवेटिव तो हमें निकालना ही है. तो f डैश x आपको हर केस में निकालना ही है. नाउ f डैश x इज हियर 2x प्लस a. नाउ दिस फंक्शन is increasing on 1 2 if f dash x is greater than 0. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब होता है, उसकी कंडीशन लगाई f dash x is greater than 0. It means 2x plus a is greater than 0. From here you will get x is greater than minus a by 2. अब x हमारा इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x 1 से तो ग्रेटर है और 2 से छोटा है. तो यहाँ पर यू कैन राइट माइनस a by 2 इक्वल 1, क्योंकि x 1 से ग्रेटर है और यहाँ पे कंडीशन आ रही है x इज ग्रेटर देन माइनस a by 2. सो यू कैन राइट इट मीन्स माइनस a by 2 इज इक्वल टू 1. फ्रॉम हियर यू गेट a इक्वल टू माइनस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट द फंक्शन given by f(x) equal to this is increasing in R. कल की वीडियो में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था जहां हमने गिवन फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाया था. तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले इस गिवन फंक्शन को. f डैश x आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 3.
3 can be taken common, then you are left with x square minus 2x plus 1. ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है x minus 1 होल स्क्वायर. अब ये क्योंकि स्क्वायर की टर्म है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव होगी. इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन आर. इट मीन्स it is increasing function in R. That's all for today. Now you can complete this exercise. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.